Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Chapter number 1 and today's topic is justice and equality. जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हमारा चैप्टर अदल इंसाफ और मुसावात पर मबनी है. And I have mentioned the important question from the book, and the possible question is, what is the importance of justice and equality? What is the importance of justice and equality? Okay, when we talk about the importance of the justice and equality, here given the definition, while establishing a just society, the Muslims have put an emphasis on justice. It is determined in Islamic belief that all human beings are to be given equal status without any discrimination of caste, color, creed, language or culture. इससे मुराद है कि एक मुनसिफाना माशरे का क़याम अमल में लाते हुए मुसलमाना ने बर्रे सगीर में अदल और समाजी यानी माशरे के अंदर मुसावात पर ज़ोर दिया. माशरे में ज़ात पात, रंग, नस्ल और ज़बान और सकाफ़त की कोई भी फ़र्क या तमीज़ रवा रखे बग़ैर तमाम मुसलमानों को बराबर का दर्जा दिए जाने का अज़्म किया गया. The establishment of equal law and same judiciary system for all the livings in the society is intended. So, रियासत में सब अफराद के लिए मुसावी कानून और यकसा इक्वल अदालती निज़ाम कायम किया गया. Independent judiciary and the supremacy of law are the basic conditions for the establishment of equality and justice. इससे मुराद है कि आज़ाद अदलिया, जिसमें अदलिया completely without having any burden बहुत ही आज़ादाना तौर पर फैसले करती है और कानून की हुक्मरानी अवाम में मुसावात और इंसाफ के क़याम के लिए बुनियादी शर्त है. Islamic system has laid stress on the elevation of justice. इस्लामी रियासत ने इंसाफ की सरबुलंदी के लिए elevation of the justice यानी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इंसाफ की सरबुलंदी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है. Now, the second one question is how Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam explained about equality in Khutbah Hijjatul Wada. In these lines and in this sermon on his final pilgrimage, Khutbah Hijjatul Wada, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam explained this fact in the following words: O people, all of you have one God, and all mankind is the offspring of Adam. Offspring, I have also mentioned the word synonyms over here. So offspring means children of Adam. And Arab has no superiority over a non-Arab. इससे मुराद है कि कोई अरब किसी नॉन अरब पर, किसी गैर अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं रखता. Nor a non-Arab has any superiority over an Arab. और ना ही कोई अरबी दूसरे अरबी पर. Also, white has no superiority over black. इसी तरह से कोई गोरा किसी काले पर फ़ौक़ियत नहीं रखता. Nor the black has any superiority over white. और ना ही कोई भी काला किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत रखता है. I have also mentioned the two possible stanzas in Urdu, and here are the word synonyms. Like the first one word is written over here: emphasis, a special importance, determined, resolute or having firm decision, discrimination, differentiation, independent judiciary, azad adliya, supremacy, superior to others, elevation, upgrading or promotion, bulandi, sermon, address, khatab, pilgrimage, a religious journey, offspring, children, superiority, a state of being superior or getting advantages. Okay, in this topic, dear students, you just have to learn and write the given topic on page number 6, which is based on the two paragraphs, and I have mentioned these two paragraphs important questions and question statements here. So you just have to learn and write the given topic, justice and equality. Thank you so much.